character of a nation is often measured by how much each person cares for a fellow citizen. If you see someone in distress, reaching out for help, do you step out of your comfort zone or would you do nothing? That's the question we try and answer in this series. What's your choice? How much do we, the people of India, really care? Domestic violence against women is one of the most widespread and yet perhaps the most underreported crimes in India. Husbands physically abusing their wives, or fathers and brothers beating their daughters and sisters. And most of it is just not reported or made public by the victims because the women are either terrified of further violence or deeply worried about public opinion. What will the neighbors say? What will the relatives say? So victims suffer in silence. Honestly, the scale and extent of domestic violence is a shame on our country. The question is, what happens when this aggression against women spills out of the privacy of homes into public areas, like it often does? If you saw a man behaving aggressively with his wife in public, would you intervene? Does anybody step forward and stop the man? Or do ordinary people feel that this is a private matter? Who am I to interfere? Well, the media widely reports incidents where nobody intervenes. Bystanders seem to simply look away and do nothing. Is this true about India, or is there another side to the story? We decided to test this using both an opinion poll and some real-life social experiments. So for our first experiment this week, we go to a smaller town, Muzaffarnagar, and set up our hidden cameras in and around a local chaat shop. जुबान चलाएगी मम्मी के सामने, दो कान पे लग गया ना बाजार में, पता लग जाएगा तुझे। ले खा। अरे क्यों मुंह लगा रहा है तू इसे? इसने दिमाग खराब कर रखा है। बिल्कुल ले मत खा। ऐसे ना समझ में आवे, थोड़ी देर को यहाँ पकड़। अरे अरे माँ चुप रह। अरे इसके ना इसका कलेश उठा नहीं सकती, ये बैग लिया आराम से देख लिया। ये मेरे ऊपर मार गई, दम लेगी मुझे। अब पड़ गई तेरे चैन, पड़ गई ना? देखियो तू बेटे, मैं तो एक बात कहूँ बस, अब या तो यू ही रहेगी या मैं ही रहूंगी। दिमाग सड़ा के रख दिया तूने। मैं तो इतनी बार चाहूँ बेटा कि वो कुछ कायदे कानून तूने पूछा? मम्मी गिर गई यहाँ, पूछा तूने? दो लगाऊं तुझे भी रेपटा, यही धक्का दे दूं इसे नाले में। एक थैला कहाँ गया? फेंक आई होगी कहीं जरूर। कहाँ गया एक थैला? 3 थैले थे ना, इसमें तो नहीं डाल रखा। कहाँ गया? पता नहीं, गिर आई होगी। बाजार के बीच में क्या नोटंकी कर रहे? थैला ले थैला 600 रुपए का सोल लेके आया था तुमने। 6000 का भी लाए हो तो हाथ कैसे उठा रहे हो लेडीज पे? हाथ कहाँ उठा रहा हूँ मैं इस पे? तो क्या कर रहे हो? प्यार से कहा तो ये जनता को क्या दिखा रहे? क्या दिखा रहा हूँ? ये प्यार होता है। अरे भैया तो हमारे अपने ये ड्रामेबाज। सड़क पे जब उसका हाथ उठा रहे तो क्या तुम माँ बेटे दोनों उसके सिर हो रहे? इसे पूछो, आराम से समझाओ ना उसे। उधर समझ में आ रहा अभी है मेरी माँ गिर गई, हाँ। उठाने तक नहीं आई। और तुम कहाँ थे? तुम साथ नहीं थे तो मैंने तो उठाया। तो क्या बात होगी? और इसको कोई मतलब नहीं। अरे यार तुम उसे प्यार से समझाओगे, समझेगी नहीं। अब भैया ये बताओ क्या समझा मैं? अरे भाई साहब क्या समझाए प्यार से? तुमने भी देखा? आप भी थोड़ा समझाओगे। तुम्हारी माँ से इसकी दुश्मनी है। दुश्मनी है तभी तो धक्का दिया इसने। तो इस तरह बाजार में ड्रामेबाजी करके दुश्मनी। बात मैंने इससे हमेशा कहा है कि जुबान चोरी मत किया कर। हाँ, हमें खुद अच्छा लग रहा है। लेकिन खड़े बोल रही है, इसके मुंह में जबान पे है नहीं। भाई साहब जरूरी नहीं है कि जो बोलता है वो गलत है और जो ना बोले वो सही है। बोलती ना अरे भैया यही तो इसका ड्रामा है। और हमने तुझे परेशाान कर रहे हैं। चुप रहेगा ये सबको भी तरफ लहर हम बाबले हो जावे बस। गलत होती है ना, चप्पल निकाल के भी सुनो जल्दी और दोहरा निकाल देती है। इनने कितने कितने ड्रामे किए भाई साहब, आपको क्या पता? सही बात ही है, ये तरीका नहीं है।
तो कुछ भी है, घर पे जाके बात करो। घर वाले कैसे भी बात करें हमसे, घर वाले मुझसे कैसे भी बात करें। बाहर नहीं करने की कोई भी। अरे वो तो गाली देती है मुझे। घर पे तो देती है ना। जी तो बाहर भी देवे यो यो ही तो इसका ड्रामा है असली। इसका ड्रामा आपने नहीं देखा आंटी, 2 दिन घर ले जाओ, आपने पता लग जाएगा। नहीं, हम तो ये आदमी को ऐसी आवाज़ उठानी चाहिए, बीच में आगे अगर कोई गलत कर रहा है उसे फौरन रोकना चाहिए। आपको लगता है ऐसे किसी एक आदमी की आवाज़ उठाने से कुछ तो चेंज आएगा? 1 से 11, 11 से 1100, फिर 1 लाख, तो कहीं से तो स्टार्टिंग होनी है। एक दफे स्टार्टिंग होगी तो संख्या तो अपना बढ़ती चली जाएगी। मुझे गुस्सा आया, मुझे क्या गंदा लगा। एक औरत के साथ ऐसा कर रहे हैं ये लोग, गलत। और आप क्या करने वाले थे अभी? मैं इसकी पिटाई कर देती। सही बात है। मुझे तो भेजा कि कल तुम चाय खाने लगे। चाहिए। अब और बदतमीजी ये है ना। एक्चुअली में आप लोग अंदर आते हैं, मैं पीट देती ये काम चालू होता है, आप लगा देते। मैं लगा देती। पब्लिक भी शुरू हो जाती है और ये बेचारे खाम खाम में लपेट मार जाते हैं। देखो सीधी सी बात है। So good to see that men can't get away with bullying their wives in smaller town India at least. Now in our nationwide opinion poll in both big cities and small cities, we asked, how common is domestic violence in this country? A huge 71% said it's common or very common. Interestingly, fewer men said it was common and more women said domestic violence is very common. Not surprising perhaps. We also found a distinct trend. Younger people say it's less common, while older people say domestic violence is indeed more common. Perhaps because they are more aware of this crime within our homes. One reason why people sometimes don't intervene is that the aggressive husband can be a little intimidating, a little scary, and ordinary people are naturally frightened to take him on. But there are many other ways of intervening and helping the victim. Our experiment this time is at Amici, a very popular restaurant at the Cyber Hub in Gurgaon outside Delhi. And 2 of our actors, pretending to be husband and wife, are seated bang in the middle of the restaurant. Of course, none of the other customers know they are actors or that we have hidden cameras all over the restaurant. Geeta, now just tell me now, who the hell was this guy? Who? I mean, who was this guy who said hi to you outside? What are you talking about? I mean, the guy was almost all over you, yeah? Who the hell was he? The guy in the parking lot? Yes, the guy in the parking lot. He's just a friend, Sanjay. What do you mean he's just a friend? I told you, I don't find these friendships acceptable. You pick up this kind of emotional baggage everywhere we go out for an afternoon, and this is what I get? Somebody hugging you all over, man, it's not acceptable. He wasn't hugging. While many customers are clearly disturbed, nobody actually intervenes. I mean, like, What about you, Sanjay? what about me? I mean, what about me? I also want to know what about me. I don't have friends like this. I don't have text messages like that. What about the bachelor's party last week? What about the bachelor's party, man? It was a bloody 38-year-old man who was getting married, and I just went along with them to a bachelor's party. You picked up girls from the bar. Well, I didn't have sex with them, if that's what you're saying. You're lying. You picked up girls. I don't lie. Listen, I told you before also. Then you're going to have what happened earlier. This is not on. I don't tell lies. So this is how it works, huh? I can't even have a friend and you can pick up girls, go sleep with them. Yeah? Just because you're a man, right? Okay, fine. So I once in a while pick up a girl, alright? So what? That doesn't come into the family. That doesn't disturb things between us. I'm also working, okay? So you I want to make also these friends, earn. yeah? And not to earn money. I work to earn The money. husband now begins to threaten his wife with violence, and it's clearly happened before. And then you're going to blame me for lifting my hand or kind of being obnoxious in a public space. I mean, what the bloody hell is all this here? You remember the time when you walked out? You hit me, okay? So you deserve it, yeah? And you make a habit of it, okay? Listen, you get one thing right, okay? If this happens again, you're not going to get to see the kids again. Is that clear? Hi, hi, Mukesh. Mukesh, yeah. I'll see you in a bit, boss. Just. The moment the husband leaves, the girls at the next table interact with the wife. Scared. I'm scared. I'm stepped out. I heard you threatening violence. I think it's safer you just stay here. Don't go anywhere. Figure things out.
Obviously, no one wants to interfere in a private matter. He does this all the time. But you had to figure things out. Just stay here because you are safe here and figure things out. He's gonna hit me again. That's what it sounded like. So just Does stay it here. all the time. Just completely lose his mind. If I speak to family, I can't. I'm not allowed to. I just can't. There are people, if these things unfortunately happen a lot, and there are people you can speak to about this. Maybe while I'm here, I can try and find you a few numbers to maybe call. Okay. Can you do that? Clearly very disturbed, one of the girls phones an NGO to come and help and offers to give the wife the numbers for other helplines. My friend is not able to come till for another half an hour or so. Scared. What do I do then? You stay here. He's gonna hit. You stay here. He's not going to hit you. He's not going to hit you here. Is there a number I can call? He immediately gets up and goes to the next table to ask for help. The helpline is number there. And we were so concerned that you were so worried. I heard that. Can I give you a hug? No. I got this. Thank you. I attacked him once, game over. You know, get up. One-time solution. I saw him do that. Oh, they were wonderful. They were dialing numbers of helplines. I did. I got a friend of mine to contact someone he knew in an NGO. So when I was calling him back, he was like calling that NGO. So he's quite mad at me now. The young men at the nearby table say it was just a matter of time before they took serious action. I mean, we were just discussing, I think we should just flush him out of the restaurant. Believe you me, I mean, he was just testing our patience. Another 5 minutes and he would have gone. So even if you're a little worried about taking on someone as aggressive as that man, the lesson there is that it's important to have on you a helpline phone number or the number of the police so you can easily phone them and help someone. Now let's go across to another city, the historical city of Taran Taran in Punjab, and see how much the men and women of smaller town Punjab tolerate violence against women. We choose a crowded area for our hidden cameras, and nobody in the crowd knows that we have brought in 2 actors. Rupa is the wife and the victim of a violent husband, and Sucha Singh is our actor who plays the role of the aggressive husband. चल ठीक आ जी होर सुना किंदा फोन है मेरे मामे दे मुंडे दा ਇਹ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂਗਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਆਇਆ ਕਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਦੀ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਭੈ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿਗੜੀ ਆ ਪੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਹੁਣ ਸੜਕ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਕਰ ਕਦੀ ਬਣਾਇਆ ਕਦੀ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਬਸ ਕਰ ਜਾ ਇੱਥੇ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾ ਕੀ ਬਸ ਕਰ ਜਾ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮਿਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਹੈ ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਿਕੰਦਰ ਆ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਿਕੰਦਰ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲਾ ਪਤੰਦਰ As the husband gets more and more aggressive, the people in the crowd look concerned and disturbed, but nobody steps forward. ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੇਰੇ Slowly, a crowd builds up around our 2 actors, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ but more out of curiosity than to step in and intervene. ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਲਾਉਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਲਾਉਣਾ
ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਪਰ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਾ ਬੋਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਦੱਸ Now our actors decide to take the scene a step further and the husband gets physical. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਲੜਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਬਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜਾਨੀ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰੂਗਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟਾ ਘਰੇ ਕੁੱਟਾ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੂਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੇਖ ਯਾਰ ਮਾਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਨਾਂ ਕੋ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਡਾਂਗਾ ਮੈਂ ਮਾਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਵੋਟ ਕਰੇ Finally, our team decides it's time to reveal ourselves before it gets too violent and explain to the crowd that this is a social experiment. हम वहाँ खड़े थे हमने देखा कि वो एक लेडीज को मार रहा है इसलिए हम 3-4 आदमी हम वहाँ से आए क्यों मार रहे हैं वो बोलता मेरी बीवी है ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ Our experiment there tends to show that the ordinary people of Punjab clearly won't let any man get away with violence against women. They get tough. Well, that's it for today. If you've got any issues on domestic violence you'd like to share with us or discuss here, please email us at ndtv.com/whatsyourchoice or ndtv.com/WIC. Now we leave you with something that man in Muzaffarnagar said, which is so true. Thanks for watching. Bye-bye. 1 से 11, 11 से 1100, फिर 1 लाख, तो कहीं से तो स्टार्टिंग होनी है। एक दफ़े स्टार्टिंग होगी तो संख्या तो अपना बढ़ती चली जाएगी, शुरुआत होनी चाहिए।